Good morning, dear students and concerned teachers. I am Smita Patel from TPS High School, Banpali. Welcome you all to this live virtual class from our Sundargarh district. Dear students, in the previous class, we have learned about a farmer named Lencho, where he lived, and also about his wantings, his children, his wife, and many more things. Today, we will learn about the second part. But before going to the topic, I want to say something. See, we have to believe in God. That is good. But remember one thing: God will help those. God help those who help themselves. Okay. So, uh, if you will work hard to achieve your success, then God will definitely help you. तमे निज सक्सेस पाइबा पाई तमे जदि हार्ड वर्क करिवो ताहले गॉड तुमको निश्चित हेल्प करिवे. बट इफ यू विल सिंपली सिट and you think that God will help you, then you will get nothing. So you have to work hard to achieve whatever you want. But I have faith on you all. मोर विश्वास अच्छी तुम मान समस्त तुम मैंने जमती हेले निश्चित भाव में हार्डवर्क कर सबु सब्जेक्ट रे एवं स्पेशली इंग्लिश सब्जेक्ट रे मध्य तुम सक्सेस आनिबो. सो लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड एंड फर्स्ट वी विल रिकॉल अबाउट द प्रीवियस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर ए लेटर टू गॉड. देन वी विल गो टू द सेकंड पार्ट. ओके, लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड. So dear students, in the previous class we have learnt about what? A Lencho of a farmer named Lencho. He was living where? He was living on the crest of a low hill. से गोटे वैली रे रोहुथिला जोथि कि जोटा सबुठारु कोन लो हिल थिला तार टॉप रे से रोहुथिला नहीं on the crest of a low hill सेठी से रोहुथिला एवं one would see the river, the rice cornfield dotted with flowers. सेम जणे सेई तमर टॉप ऑफ हिल रु ए गुडाको सबु देखि पारुथिला नहीं. One would see river also and also rice cornfield from this top of the hill. Okay. तो एठी के रोथला हमरो लेंचो रोथला नहीं. लेंचो नामक जने फार्मर एंड ही वाज वेटिंग फॉर व्हाट से का पे अपेक्षा करला. ही वाज वेटिंग फॉर अ गुड सावर. गोटे भलो वर्षा से वेट करथिला. वर्षा हेले कोन हेबो ना तार जो फसल थिला ताहा आहुरी ताकू कोन करबो ताकू भलो फसल देबो नहीं. So he was waiting for a good shower and for that only from the morning onwards he was looking towards the northeast. He was looking towards the northeast नहीं से वर्षा को जेहेतु अपेक्षा करथिला. He was looking throughout the morning towards the northeast direction. Next when he entered into the room and he talked with his wife about the rain. About the rain, he said that today we will. He predicted. Say purbanumana logela. Say today we will get a good shower for good harvest. No, for good harvest. He was a very hardworking man. He से गोटे बड़ा हार्डवर्किंग फार्मर थिला नहीं. आउ से तार फील्ड को इंटिमेटली बहुत निकटतर से जानी पारथिला. से बहुत हार्डवर्क करिथिला एवं से अपेक्षा करथिला कोन पई गोटे गुड सावर पई. गोटे गुड रेन हेले से कोन हबो ना से तार आहुरी फसलटा ताकू लाभ प्रदान करिवो. So he entered into the room and said to his wife that we will get good rain today. When he said like that, his wife said to him that yes, God willing. Means से भी कौन से मध्य गॉड उपरे विश्वास देखै कहला yes, God willing. God रो इच्छा थिले आमे निश्चित आमे कौन गुड हार्वेस्ट
पाई परिबा गुड रेन मध्य गुड शावर मध्य हमर वर्षा मध्य हेबो कोई कि से तांको सम्मति जणेला नाही। नेक्स्ट आमे देखिदिला कोन ना बिग तार एल्डर चिल्ड्रन वेर वर्किंग इन द फील्ड से माने फील्ड रे काम करथिले एंड स्मॉलर वन छोटो छुआ माने कोन करथिले दे वर प्लेइंग नियर द हाउस। After completing the dinner, after completing the preparation of dinner, Lencho's wife called all the children to have their dinner. Okay. Then while eating their dinner, Lencho felt that rain is coming. नहीं से feel कला जे rain आसी गलानी. So he came out of the room and feel that sweet air and also that rain falling from the sky. He enjoyed that rainfall. Okay, and he compared that rainfall, that raindrops with the with big raindrops with 10 cent and small raindrops with 5 cent. से बिग जो रेनड्रॉप्स गुड़िक पड़ूला से गुड़िक बड़ बड़ बुंदा गुड़ा को से कहा सहित तुलना करुला 10 सेंट सहित एवं छोट बुंदा गुड़ा को 5 सेंट सहित तुलना करुला। जेहेतु ए ऑथर आमर ए लेटर टू गॉड रो ऑथर मेक्सिको सिटी रो अटंती तेणु सेठारे रुपीस चले नाही सेठी कोन सेंट सेठारे सेंट कुहा जाय तेणु 10 सेंट थिला से बिग रेनड्रॉप्स को 10 सेंट सहित आउ स्मॉल रेनड्रॉप्स को 5 सेंट सहित कंपेयर कला नाही से काहे कि पैसा सहित कंपेयर कला ताहा मध्ये तुमको जणा काहे कि ना when raindrops or rain fall into his field, then what happens? He will get good harvest, and after good harvest he will get much more money. Yes. Next, but suddenly what happened? Suddenly that raindrops stopped raining, and what happened? A wild storm means बहुत जोर रे कोन हला पवन बहिवा को लागिला एवं ता संग को कोन आसला हेल स्टोर्म नहीं बड़ बड़ हुआ पथर पोगड़ी को पड़िबा को लागिला नहीं से जेते बेले स्टार्टिंग हुआ पथर गुडी को पड़िबा स्टार्ट हला से भाबिला नहीं इट विल पास क्विकली दैट विल पास क्विकली माने शीघ्र एहा बंद हे जबो बट ताहा होतिला नहीं कोन हला इट कंटिन्यूड 1 hour for 1 hour ताहा कंटिन्यू हेलस्टोन बरसिबा को लागिला एंड एट दैट टाइम दैट हेलस्टोन्स आर सो बिग से हेलस्टोन्स को कहा सहित कंपेयर कला सिल्वर कॉइन सहित नहीं ही कंपेयर दैट हेलस्टोन्स विथ सिल्वर कॉइन। नेक्स्ट व्हाट हैपेंड when after 1 hour he entered into the middle of the field and showed his children that hailstones destroyed the field completely नहीं से hailstone गुडी को तांको field को completely destroy कर दी थी तार harvest जो से corn field रे जो सबु पत्र तार सबु कोन हितला all covered with snow. You can see here all covered with that hailstones and was looking like all covered with salt. नहीं salt बिछे हला पड़ी ताहा देखा जाउथला सबु तार कोन corn field ऊपरे आउ से तांको छुआ मन को कोन कहला जे से जो गुड हार्वेस्ट से जो चिंता करथिला ताहा नष्ट हो गेला कहा द्वारा हेलस्टोन्स द्वारा नष्ट हो गेला आउ ए प्लेग ऑफ locust this insect would have left more than this hailstone ए जो locust जो पत्र क्या जो पोक अछंती ताहा जदी आसी थांते हेले से माने किछि मात्रा रे हमर हार्वेस्ट को माने हमर सॉरी हमर जो कॉर्न फील्ड को टिके हेले किछि से माने छाड़ी देई थांते मात्र ए जो हेलस्टोन्स गुडी को से गुडी को कोन कला ना सबु नष्ट करि देई गला so he was filled with sorrow his heart filled with
sorrow. समस्ते दुखरे पड़ी गले एवं से माने से लेंचो तांको परिवार को कोन कहला ना this year we will not get any crop नहीं से माने किछि आओ आज ए वर्ष किछि पाई परिबे नहीं and they have to live in hunger भुखिला तांको रहिबा को पड़िबो. Now we will see our next part. I am reading loudly. You also read with me. That night was a sorrowful one. Okay. That night, which night was sorrowful one? That night was sorrowful one. All our work for nothing. That no one who can help us. We will all go hungry this year. But in the hearts of all who lived in that solitary house, in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Don't be so upset. Even though this seems like a total loss, remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. First, understand the hard words. Sorrowful. Sorrowful means having sadness. Okay, having sadness. That you know, when we feel sad, that is called sorrowful. Solitary means this house. Lencho's house was single one, solitary. नहीं, एकुटिया था रखा है lonely or single one. Next, so upset means very disturbed. Seems means appears. Okay. Next, understand the para. That night was sorrowful one. Which night was? After when hailstones completely destroyed the cornfield, they feel what? That night was very sorrowful one. All our work, whatever work Lencho had done in that cornfield, all work for nothing. They will not get anything from that field. There's no one who can help us. केही नांती तांकु help करिबा पाई. We all go hungry this year. एहा से कहउछंती के कहउची लेंचो कहउची तांको परिवार जनकु जे एई वर्ष आमे जितकी सबु आमे कठिन परिश्रम करिथिले फील्ड रे गुड हार्वेस्ट पाई सबु कोन हेला धुलिसात हे गला and no one there to help us. नहीं, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope. ए मध्य तांकर एतकी सबु कोन क्षति हेले मध्य तांकर समस्तंकर हृदय रे गोटी आशा थिला कोन आशा ना हेल्प फ्रॉम गॉड से गॉड को थारु किसी हेल्प पाइबार तांकर आशा थिला. Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. केही भी भूखिला मरिबे नहीं. एहा से माने निजो को कहि कि कोन आश्वासना दउछंती नहीं. Next, from this para we will discuss some comprehension question. What was that? This year we will have no corn. Whom did Lencho say so? Okay, एठारे देखो कोन कहउची ना this year we will have no corn. Whom did Lencho say so? Lencho एहा कहा को कहिला. Okay, कहा को कहिला? This year we will have no, Lencho said so to his son. से तांको son मान को कहिला नहीं. What was in the hearts of all who lived in that solitary house? तांको जो solitary house रे जो माने रहुतिले तांको हार्ट केमती कोउथिरे भरी गला ना lived in that solitary house, there was a single hope. तांकर से माने sorrowful थिले आ तांकर गोटे ही आशा थिला कोन help from God. So तांकर से माने जो आशा करथिले कोन गोटे से God रू help पाइबार नहीं. All next para we will learn. All through the night the Lencho thought only one hope. Only one of what is that? The help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of man. Was an ox of a man working like an animal in the field,
but still he knew how to write. The following Sunday, at a daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. Okay. All through means throughout the माने सारा से कौन करथिले लेंचो thought only of all through the night माने से सारा राति जो चिंता करथिला नहीं, that is about that. Conscience means कौन होते ना inner sense of judgment, and ox of a man means very hard working like an ox. Lencho was very hard working man, nahin? Hard working farmer also you can say. See, all through the night Lencho thought only of one hope. से राति सारा जेते बेले से तार कॉर्नफील्ड कौन है नष्ट है राति सारा कौन भाभी the help of God, whose eyes as he had been instructed से जेतु जानी कौन जानी से see everything के सब देखु God is seeing everything, even what is deep in one's conscience. Means कहार समस्ते कौन आमर भितरे कौन चलुची आमे अन्य जने न जानिले मध्य किए जानुची ना गॉड सबु जानुचंती नहीं. तो सेथिपाई से कहिसंती in God conscience he knows everything what is going behind going inside our soul नहीं आमर भितरे कौन चलुची ताहा मध्य गॉड को जना. Lencho was an ox of a man, means he was very hard working man, working like an animal in the field. बहुत कठिन परिश्रम करी थाए से, but still he knew आमर आमे जड़ा अच्छी जे माने कि बेसी परिश्रम करंती गोटे माने गोटे भूल धारणा थाए कौन ना से जो माने फिजिकली वर्क करूछंती काम करूछंती तांकू लेखा पढ़ा हो किमा अन्य जिंस किसी अधिक माने जणा नथिबो कहिकरी सेटा जो भूल धारणा अछि एठी किंतु विपरीत कोन ना लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन. ही वाज वर्किंग हार्ड लाइक एन ऑक्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट ताकू लेखिबा मध्य जणा अछि. द फॉलोइंग संडे से जो नेक्स्ट डे जो संडे थिला से दिन डे बेकटा लीजर टाइम रे डे समय रे कोन कला ही बिगन टू राइट ए लेटर. से लेटर लेखिबा को लागिला. का को लेखिला which he himself would carry to town. से लेटर जो लेखिला ताकू से निजे पुणी कौन से पाखरे तो नहीं से तो हिल ऊपर रोची तुम देखिछो नहीं हेले से कुआड़ को गला टाउन को गला कौन करिया पई ताकू सेंड करिया पई कोठी को गॉड पाखो को नहीं. इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड. से गॉड को पाखो को जो लेटर लिखी ताकू सेंड करिया पाई से टाउन को गला. तो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन एथरु कोन आसीबो ना व्हाट कैन गॉड्स आई सी. गॉड्स आई कैन सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्शियस. मीन्स कहार विवेक कोन कहूची हां ताको मुहरे न कहिले मध्य गॉड सबु जानि छंदी नै. What is the meaning of the line Lencho was an ox of a man? Lencho was an ox of a man. What is the meaning of this line? This line means Lencho was very hard working. से बहुत कौन अटे hard working man अटे like an ox. नहीं. Lencho was working like an animal in the field, but still he knew one thing. What was it? मैं पे कहली गोटे भूल धारणा जो अच्छे जो माने हार्ड वर्किंग अच्छी जो माने फिजिकल वर्क अच्छी आउटे साइड टा कौन आउटे साइड मीन्स लेखा पढ़ारे से माने वीक थे बोले जो भूल धारणा अच्छी सेटा लेंचो ठारे सेटा ऑपोजिट अटे कौन ही वाज हार्ड वर्किंग मैन आल्सो एंड आल्सो ही न्यू हाउ टू राइट. ओके, लेंचो वाज वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू वन थिंग इट वाज हाउ टू राइट. ओके, who did Lencho write a letter? कहा कुछ लिखले. This is
Very easy one. Lencho wrote a letter to God. When did Lencho begin to write the letter? केतेबेले से start कले लिखिवा पाई? नहीं. Lencho began to write the letter at daybreak the following Sunday. नहीं. Following Sunday रे जो leisure time day break जो मिले से इस समय से लिखिवा start कले. Next we will go to the next part. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. Because the hailstorm, after that you know, that's why it has shown ... because God knows everything. Yes. Lencho had faith in God that God knows everything. He know that I was working like an ox in the field. मु केते काम करथिली ताहा मध्ये God जानिछंती. तेणु जेहेतु hailstone also happened by the God को द्वारा ताहा हेछि नहीं हेले God ही तांकु सहाय्य करिवे बोली तारो पूरा दृढ़ विश्वास अच्छी एमती नहीं कि नहीं आसीबो होप गोटे अच्छी आशा सेमती नहीं तारो दृढ़ विश्वास अच्छी जे गॉड ही तांकु जेहेतु गॉड से सबु जानि चंती तेणु गॉड ही ताकु हेल्प करिवे नहीं से सेति में लिखिची ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी तमे जदी मते हेल्प करिवो नाही नहीं मी एंड माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर आमे भूखिला रहि जिवु आई नीड 100 pesos in order to sow my field again. तारो ये रे आउथरे बुनिबा पाई ता खेतरे आउथरे बुनिबा पाई ताको केते टंका दरकार 100 pesos दरकार आउ ताहा मते तुमे सेंड करिवो जहा जोथरे कि आमे कोन करबा ना आई विल ग्रो वंस अगेन से आउथरे कोन करिवो रिसो करिवो आउथरे बुनिबो नहीं आउथरे बुनिबो आउ कोन करिवो आउ नेक्स्ट क्रॉप हेबा पर्यंत से सेइथिरे कौन करिवो तांको परिवार वर्ग सेटा सेथिरे चलिबे नहीं. He wrote to God in the address अरे से कौन लिखला to God on the envelope put the letter inside and still troubled काहेकि लिखा हेछि ना after that wrote letter लिखिबा परे मध्य आउरी trouble कोन अछि ना सेई तांको पाखरे से जेहेतु हिल उपरे रहुची एकुटिया रहुची क्रॉस टॉप ए हिल नहीं तेणु सेठारे पाखरे कोन मेल बॉक्स सेंड करिवार नाही व्यवस्था तेणु से ताकू पुणी से लेटर नै कि जीवा को पड़ची कोडी को ही वेंट टू द टाउन नहीं टाउन को से गला at the post office he placed a stamp ता ऊपर स्टैंप लगेला on the letter and dropped it into the mail box आउ तापरे जाई से मेल बॉक्स रे ड्रॉप कला नहीं एठारे हमें देखि परिबा in order to sow means बुनिबा पई आउथरे सोइंग करिया पई आउथरे बुनिबा पई here you can see the picture of envelope mail box picture then stamp केमती थाए postal stamp गुडी को एते तो हमें मोबाइल रे यूज करछु विभिन्न मेसेज व्हाट्सएप मेसेज नहीं इंस्टा रे हमें मेसेज करछु किंतु प्रथमे कोन थिला envelope रे लेटर रे से माने पुरे करी ये करथिले आ सेथिरे गोटे स्टैम्प बसुथिला दिस इज द पिक्चर ऑफ स्टैम्प ओके until means not till still till now तापरे हमर असला troubled means mentally disturbed okay next comprehension question from this part what did Lencho request God कोन से रिक्वेस्ट करथिले Lencho God को ना Lencho requested God to send him 100 pesos नहीं से 100 pesos पठेवा पाई गॉड को रिक्वेस्ट करथिले नेक्स्ट व्हाई डिड लेंचो आस्क गॉड फॉर मॉनेटरी हेल्प काहेकि से मॉनेटरी हेल्प पाई कहिथिले ना लेंचो आस्क्ड गॉड फॉर मॉनेटरी हेल्प इन ऑर्डर टू सो हिज फील्ड अगेन एंड लिव अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप कम माने हमरो आउथरे से बुनिबा पाई एवं ता सहित कोन तांगर क्रॉप नेक्स्ट न आसीबा पर्यंत चलिबा पई से 100 pesos गॉड को मॉनेटरी हेल्प रूप रे मागिथिले नहीं लेंचो रोट टू गॉड
sorry, what did Lencho write on the envelope? Se envelope ku letter ta base saiba pore setire kon lekhitile envelope upre na Lencho wrote to God on the envelope. Nahi, what did Lencho place on the letter before dropping it into the mailbox? Lencho placed a stamp. kon karthile gote stamp baseitile on the letter before dropping it in the mailbox. Nahi, next vara dekhiba, one of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing. But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith!" Se kona comment kala? What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting off a correspondence with God. Okay, first understand that unknown words. Amiable means friendly. Broke out laughing. Esli rohitbo eka sange jor re hasibo. Taku kuha jaye broke out laughing. Here you can see. Okay, taku kuha jaye broke out in and with laughing. Nahi, tapping. Commented means amaro o mantavya deba nahi, opine. Faith means faith means vishwasa nahi, belief. Correspondence means communication by letter or mail. So let's understand the para. See, one of the employees who was a postman and also helped at the post office. One of the employees of that post office. Okay, he went to that. He went to the. He got that letter which Lencho has sent to the God. He got that letter and went to his boss laughing heartily. When he saw that letter and when he saw that address that to God, in his career, he never seen any type of address like this. Okay, when he saw that address to God, he started laughing. Se jetebele dekhila address re to God lekha aichi, se hasiba start kar dela nahi, laughing heartily and showed him the letter to God. Okay, never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing. जेतेबेले से postmaster को से letter ता देखेले से मध्य कौन बहुत जोर रे हसिबा को लागिले. Okay, आउ postmaster जे कि a fat, amiable person थिले. Fat means fat person and also amiable means friendly person मध्य थिले. So से मध्य जेतेबेले से लेटर विषय रे से एम्प्लॉय ता तांकु बतेला पोस्टमैन ता पोस्टमास्टर को बतेले से मध्य कोन बोले he also broke out with laughing नहीं. So but immediately जेतेबेले से हसिले but immediately he also stopped laughing and what he said, he commented about that letter that what faith, केमती प्रकार एटा विश्वास से मध्य आचंबित हो गले. व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन. से इच्छा करथांती जे मोर मध्य एमती विश्वास थांता कि हु रोट दिस लेटर, जे लेटर लिखिछि सेमती विश्वास साथ मोर भी थांता कि गॉड ऊपर स्टार्टिंग ऑफ ए कॉरेस्पोंडेंस विथ गॉड. से जो लेटर ता लिखाइछि स्टार्टिंग कराइछि कोन ना गॉड ऊपर, फर्स्ट गॉड को से समुदान करी से गॉड को गॉड सहित कम्युनिकेशन करिया पई तांकर जो विश्वास रही गॉड उपरे ताकू आहुरी निश्चित करिवा पई गॉड बुधवे कोनसी जदी से तांकर जो विश अछि जो हेल्प
से पाइबा को इच्छा करछंती ताहा जदी पूरा न करिवे ना जदी किछि पूरण न हेबो ताकू सेथि पई से गॉड रो हेल्प को निश्चित भाबरे निश्चितता करिबा पई से गॉड को सहित कम्युनिकेशन करछंती थ्रू दैट लेटर जे नाई मु कोन को जेंती ले ए लेटर ता सेंड करिबी नाई लेटर ता लिखिबी जो द्वारा गॉड निश्चित भाबरे तार जो असुविधा है तार समाधान करिवे गॉड विल हेल्प डेफिनेटली दे कैंट डिनाय अबाउट दैट प्रॉब्लम नहीं तार जो प्रॉब्लम अछि ताकू से डिनाय करि परिबे नाही एवं से जो हेल्प से गॉड ठारू पाइबा को इच्छा करछंती ताहा निश्चित पूर्ण हेबो सेति पई से तांको लेटर द्वारा से तांकर हेल्प को आहुरी से कोन करछंती निश्चित परे छंती नेक्स्ट comprehension question देखिवा who collected the first letter of Lencho from the mailbox किए collect करला mailbox रू letter टाकू who collected the postman collected the first letter of Lencho from the mailbox नहीं गोटे postman से collect करला से mailbox रू whom did the postman show the letter कहा कुछ से देखेले ना the postman showed the letter to the postmaster से postman letter आनला परे कहा को देखेले पोस्टमास्टर को देखेले नहीं व्हाट वाज द पोस्टमास्टर लाइक पोस्टमास्टर केमती थिले से तांकर केमती थिला अपीयरेंस वाज फैट एंड एमिएबल पर्सन से फैटी पर्सन थिले एवं एमिएबल मीन फ्रेंडली पर्सन मध्य थिले वेयर डिड द पोस्टमास्टर टैप द लेटर से कोठी टैप करथिले लेटर को द पोस्टमास्टर टैप द लेटर ऑन हिज डेस्क रे से टैपिंग करथिले नहीं व्हाट फेथ who was the speaker जो what faith जो दिया है जो पारा रे सेत रे से किए कहले एटा what faith कहि करी हमरो के कहले ना द पोस्टमास्टर नहीं पोस्टमास्टर कहले दिस वन द रॉन्ग वन हमर जो पोस्टमास्टर थिले से कहले पोस्टमास्टर वाज द स्पीकर नहीं why did the master turn serious से के हमरो why did the postmaster turn serious से जो loudly जो laughing करथिले तापरे suddenly काहे की serious हे गले the postmaster turned serious thinking of the unflinching faith of the man in God तो तार कोन गॉड ऊपर जो दृढ़ विश्वास जो रही छी ताहा से चिंता करिकरी सडनली पुनी कोन हे गले से सैड मूड रे तापरे सीरियस मोड रे से आसी गले नहीं नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द चैप्टर ओके फर्स्ट क्वेश्चन हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर 100 peso Very good. 100 peso. Very good. 100 pesos. Next, on seeing the letter, the postmaster was moved by Lencho's death. What will be the answer? कौन हला? Unwavering faith, handwriting देखी किसे ये ले? Love for God और determination. Option C. Option C, no, try. Option D. Option D. First, you read every option. You have to read every option. Carefully. Very good. Option A. Unwavering faith. Very good. Sit down. It's okay. Next, what was the immediate reaction of the postman on seeing the letter? Immediate reaction कौन थिला postman से letter देखिबा परे laughed wholeheartedly, cried, felt sad about what happened, or felt empathetic. What will be the answer? Sadly. Option A. Yes, option A is the right one. Very good. Next, who read the letter sent by Lencho? किए पढ़ले? Option B.
Option B is the right one. Very good. Option Sit B. down. Option B. Yes. Option B is the right one. Next. The postmaster was a fair, amiable man. What is the meaning of amiable? Amiable meaning कौन होते? Friendly. Option C, friendly. Option C. Yes, option C is the right one. Very good. Okay, dear students. Now this one the long questions are what you get, what you will get in the board exam. See, गोटे वे अच्छी लॉन्ग क्वेश्चन लिखवा पाई तुमको गोटे क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन आसूची से समय रे तमे ताकू तीन टा पार्ट रे विभक्त करिवो गोटे हला इंट्रोडक्शन तापरे कंटेंट नहीं तापरे कंक्लूजन सब बेले चेष्टा करिवो कोन गोटे क्वेश्चन जते बेले आसूची ताकू तीन टा पार्ट रे डिवाइड करी करी लिखिबा पाई ताले तमे मार्क तमे पाई परिवो नहीं जिते बेले कोनोसी जे कोनोसी लॉन्ग क्वेश्चन आसु से जेति मार्क रे थाउ तमे सेटाकू मेन पार्ट कंटेंट पाई टिके बेसी रखिवो तापरे इंट्रोडक्शन पार्ट पाई तापरे तमरो कंक्लूजन पार्ट पाई तमे जदी 5 मार्क्स आसुची 1 मार्क फॉर इंट्रोडक्शन देन 3 मार्क्स फॉर योर कंटेंट पार्ट माने मिडिल पार्ट मेन पार्ट पाई तापरे कंक्लूजन पार्ट पाई तमे 1 मार्क रखिवो नहीं एठा देखो जेमति देछि व्हाई डिड लेंचो बिलीव दैट गॉड विल हेल्प हिम नहीं लेंचो काहे कि बिलीव करथले जे गॉड विल हेल्प हिम हेले एठी रे कोन करबो ना लेंचो वाज ए थीस्ट से गोटे बहुत माने ट्रू बिलीवर ऑफ गॉड थिले थीस्ट माने कोन ना ट्रू बिलीवर ऑफ गॉड थिले एंड एन ardent believer in God strong okay even after on capital 1 even after his field was destroyed by the hailstorm it is the tomor introduction part pole gala nahi introduction asi gala na lenchoro taro te kemti thila ta bisore eta dia hichi tapre asila kono na even after his field was destroyed by the hailstorm his wife suggested him that God knows a person inside out God समस्तंको कोन भलो भाबरे जानि थांती इनसाइड विवेक माने भीतरु मध्ये जानि थांती बाहरु मध्ये जानि थांती जोटा कि हमर इनसाइड रे चलती ताहा मध्ये तांको भलो भाबरे जणा therefore he decided से कोन डिसाइड कला he decided to take help from God and wrote a letter him demanding 100 pesos so that he can resow his field and survive for another year without harvest okay तमे चेष्टा करिवो ताकू ठीक विस्तृत भाबरे टिके वर्णना करिकि लिखिबा पई नेक्स्ट व्हाट डिड लेंचो डिसाइडेड टू डू टू सिक्योर द हेल्प ऑफ गॉड से कोन डिसाइड करला कोन सिक्योर करिवा पई हेल्प गॉड को थारु हेल्प जो से माने पाई हेल्प जो आशा करछंती ताकू सिक्योर करिवा को ताकू निश्चित करिवा को से कोन कला ना लेंचो हैड ओनली वन होप okay help from God that help thila it was the help of God this is the introduction part tapre kala he was a toilsome as an ox se kon bahut hard working thila as an ox nahi but he knew how to write the following Sunday at daybreak se leisure time re kon kala he began to write a letter se letter lekhila taro जो कौन थिला हेल्प फ्रॉम गॉड को सिक्योर करिवा पई से लेटर लेखिला ही मेड ऑफ हिज माइंड टू कैरी द लेटर हिमसेल्फ टू द टाउन से लेटर टाकू टाउन को से निजे नेकी गला एंड मेल इट ताकू पुनी सेंड कला नहीं इट वाज नथिंग देन ए लेटर टू गॉड so what is the conclusion part here na what is the what he decided to do to secure help from God na it was a letter nahi it was nothing but a letter to God se letter jo likhila taha se letter deiki nishchito kala je taro jo help ta achi taha sunishchito hei paribo nahi so dear students next you have this number as a homework I hope you have understood this part very briefly next we will learn about the third part of the chapter
this one a letter to God. Okay, so just try to read this chapter thoroughly, and also if you will write down this small question by yourself, then it will help you in multiple choice question also, and also you can write long question answer. If you will write this type of small question, then it will help in both the long question and also in multiple choice question. So dear students, thank you.